इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जेईई एडवांस 2021 का ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इस तरह से जो आपका जेईई एडवांस है और जो भी का जेईई मेंस हो गया, इस तरह के सारे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये इंटीग्रेशन टॉपिक से दिया हुआ है, तो हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं कम समय में हम लोग कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए क्या कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आपका फंक्शन का एक लोअर लिमिट दिया हुआ जो निगेटिव में है, अपर लिमिट जो कि आपका पॉजिटिव में है, और दोनों सेम वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ आपका साइन का फर्क है। नीचे में आपका निगेटिव है, अपर में जो है आपका अपर लिमिट जो है वो आपका पॉजिटिव है, और आपका जो दिया हुआ फंक्शन एक दिया हुआ। तो मैक्सिमम जो आप क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें आप ये देखते होंगे कि दिया गया फंक्शन किस तरह का है। दिया गया फंक्शन किस तरह का, इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोअर लिमिट आपका निगेटिव है, अपर लिमिट आपका पॉजिटिव है। तो इस केस में आपका दिया गया जो आपका फंक्शन है, हम वहां पे देखते हैं कि दिया गया फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वही है, जैसा कि एडवांस के हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेज हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करें। तो स्पष्ट रूप से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर fx = f - x होता है तो ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है। जैसा कि आप अगर इस फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करेंगे तो बोथ कंडीशन में आप जो है सेम फंक्शन ऑब्टेन करेंगे, दैट मींस मॉडुलस ऑफ 100x² - 1। तो अगर आप सेम फंक्शन ऑब्टेन करते हैं दैट मींस ये फंक्शन आपका क्या होगा, इवन फंक्शन हो गया। अगर ये फंक्शन आपका इवन हो गया, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यू कैन राइट दिस फंक्शन एज 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ 100x² - 1 with respect to x from 0 to 0.15। ऐसा क्यों हुआ तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लिख सकते हैं fx इवन फंक्शन। अगर fx आपका इवन फंक्शन हो तो इस कंडीशन में जो है आपका या 2 टाइम्स 0 to 0.15 एंड 100 टाइम्स x² - 1 का मॉडुलस हो जाएगा। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब आप इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से अब ये जो है मॉडुलस हम लोग को यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। तो मॉडुलस हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, उसका आपको सिंपल सा फंडा है कि आप इसका साइन स्क्रीन खींचना स्टार्ट करते हैं, और साइन स्क्रीन खींचने से पहले क्या करते हैं कि आप इसमें जो है आपका मॉडुलस ऑफ 100x² - 1 जो है, इसमें ये जो फंक्शन है 21 पॉइंट पे ये फंक्शन आपका 0 के इक्विवेलेंट है, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो आपका अगर हम 100x² - 1 = 0 ले लेंगे तो यहाँ पे x = क्या आएगा, आपका आ जाएगा +-1/10, दैट विल बी 0 +-0.10। ये आपका आ जाएगा। ये अगर आप इसका मैग्नीट्यूड x का वैल्यू निकालते हैं दैट मींस क्रिटिकल पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये आपका 100x² - 1 जो है आपका 0 के बराबर आता है। अब अगर हम यहाँ पर साइन स्क्रीन लेते हैं तो साइन स्क्रीन लेंगे तो आपका यहाँ पर 0 आएगा। अब नेगेटिव पार्ट हम डायरेक्ट छोड़ देते हैं। नेगेटिव इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि नेगेटिव जो है आपका लिमिट, ये जो आपका इंटीग्रेशन में है ही नहीं, तो हम नेगेटिव नहीं ले देंगे, और आपका 0 और यहाँ पर 0.10 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका -0.10 भी होगा, लेकिन इस सेक्शन को हम लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन में आपका ये हिस्सा नहीं है। अब हम लोग इसका मतलब 0 से 0.10 और 0.10 से इन्फिनिटी की ओर हम लोग चलेंगे, बट इन्फिनिटी तक हमें नहीं जाना है, ये डायरेक्ट हम लोग को कहाँ तक जाना है, 0.15 तक ही जाना है, जैसा कि इंटीग्रेशन में दिया हुआ। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके इस फंक्शन का साइन का थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं। अब देखिए अगर हम इस फंक्शन जो आपका है ये मॉडुलस ऑफ 100x² - 1, अगर इस 100x² - 1 में x का वैल्यू 0.10 और 0.15 के बीच में पुट करते हैं तो ये जो आपका fx है 100 टाइम्स x² - 1 ये आपका नेगेटिव आएगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ x = ये आपका डिफाइंड इस तरह से होता है x and -x, it will be x when x is greater than or equal to 0 and it will be -x when x is less than 0. So you can write same way if you put any point or any value between 0.10 and 0.15, then function whole value of function, that means 100x² - 1 will be negative, so you can write sorry, it will be positive, so you can write as a positive. And if you take any value that lies between 0.10 to 0.10, that will be negative, and in that case you will write it as a negative. So if you want to check, you can check here, just you have to put between 0.10 to 0.15 for check out. Let us put 0.11, and if you put 0.11 in this function you will get 100 times
0.11 whole square minus 1. That will be 0.11 whole square. That means 0.01221, and if you multiply again with 100, it will be 1.21 minus 1. That will be 0.21, which is greater than 0. In that case, definitely it will be positive section. And similarly, if you take any value between 0 to 0.10, in that case it will be negative. You can take any point, just like you can take 0.09, you can take 0.08, you can take. And if you put this point in this function, you will get negative. In that case, what will happen here? You can just I want to delete this part. Again, I want to write it. Now, this function will be 2 times 0 to 0.15. Fx will be modulus of 100x square minus 1 dx. Now, this function will be divided into two parts. 2 times 0 to 0.10, and in that case, इस कंडीशन में क्या होगी कि आपका जो फंक्शन है 100 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका नेगेटिव आ रहा है। तो इस केस में आपका क्या होगा? आप जब जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर ये आपका लेस देन 0 होगा तो आपका माइनस x हो जाएगा और मॉड हट जाएगा। तो इस केस में आपका क्या होगा? माइनस 100x स्क्वायर माइनस 1 मींस दैट 1 माइनस 100 टाइम्स x स्क्वायर dx। फिर आपका सेकंड पार्ट आपका जो आएगा फ्रॉम 0.10, दैट मींस प्लस फ्रॉम 0.10 टू 0.15, एंड ये फंक्शन आपका सेम रहेगी क्योंकि ये सेक्शन आपका क्या पॉजिटिव है dx, और यू कैन राइट हियर एज इट। नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट एंड यू कैन फाइंड इट्स वैल्यू। नाउ इफ you can find its value. Now if you put it, it will be 2 times 0 point. I can integrate directly, and you will put here x minus 100x cubed upon 3. You can write here x minus 100x cubed upon 3, and it's you can write as it, and its lower limit 0 and upper limit 0.10 minus it will be 100x cubed upon 3 minus x from 0.10 to 0.15, and again you have to put, you will get 2 times, you can write here 2 times, if you put 0.10 in this section you will get 0.10 minus, if you put 0.10 100 times 0.10 whole cube upon 3, and if you put 0.10 here you will get 0.1 into 0.1 into 0.1, that will be 0.001, and if you multiply again with 100 0.001 you will get just like a 0.1 upon 3. This section will be as it, and you can write here, and if you put again 0 it's and you have to subtract, you will get 0, so you can leave that part. And now here you have to put here 100 times 0.15 whole cube upon 3 minus 0.15. Second part will be, again you have to put in this part, you will get minus same point here, same point here, so you can write here directly 0.1 upon 3 now, and second point will be minus plus 0.1. This will be your whole expression. Now again I want to rub this section so that we can manipulate it easily. Now if you calculate it, it looks very easy. That will be 15 whole cube, and if you calculate it, it will be 2 times. Directly you can write 15 whole cube 3375, as you know that, and this point 0.1 and this point 0.1, this point 0.1 and this point 0.1, and minus 0.1 upon 3. Now here sorry, this part having plus sign, I have mistakenly written here. Now you have to simply add 0.1 2 times 0.1, so I want to take common. You can write here 2 times 0.2, this part and this part, and you can see here, so 0.1 upon 3, 0.1 upon 3. You can write here 0.2 upon 3, and this is your 0.15, and you can write directly 0.15, and this point
will be 15 whole cube. And you know that 15 whole cube will be what upon 3375 and whole cube. So 6 decimal you can write 3 to 0.003365, and if you multiply again with 100 you will get just 0.3375 upon 3. You can write here again plus 0.3375. This will be your complete expression. Now again you have to calculate it, and if you calculate you will get 2 times. This will be your 0.2 and this will be your 0.15. If you put here 0, it will be 0.20 positive and 0.15 negative. Now you have to subtract it, you will get simply 0.05, and this will be what? This will be your minus 2 upon 30, and you can write 0.05 just like a 5 upon 100, and this will be your 3375 upon 3000. Sorry, 3000 decimal 30,000. Now if you see here, it's this is your 3000. I think there should be 3.3 again 100 minus 0. Okay. Now you have to calculate it, and you will get it, and you will get 105 times, and this will be that and that. Okay, it will be finally 5 times 575 upon 3000. You can calculate it, and finally you will get, if you compare this section, you will get k is equal to 575. This is your correct answer.